Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So कल हमने देखा था the control flow control statement or conditional statement, right? We have seen the conditions. But today we are going to see the concept of loop. Okay. Now what is exactly the loop? Okay. Basically पहले वो understand कीजिए. देखिए लूप का सिंपल मीनिंग है कि आपको कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ओके इफ यू वांट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट get executed number of time okay number of times देखिए for example if you want to print from number 1 okay to number 10 then what you will do exactly अभी तक जो आपको कंसेप्ट पता है वहां से आप क्या करोगे if you don't know the loop then what you will do exactly मान लीजिए कि अभी आपको ओके एस वाई एस ओ ओके मान लीजिए एस वाई एस ओ इट विल गेट प्रिंटेड इन ब्रैकेट आप क्या प्रिंट करोगे यहाँ पे 1. 1 ओके देन स्टेटमेंट क्लोज राइट करेक्ट हाउ विल प्रिंट इफ यू वांट टू प्रिंट फ्रॉम नंबर 1 to 10 फिर आप क्या करोगे अगेन इन सेकेंड लाइन वी आर गोइंग टू प्रिंट 2 राइट यू आर सेइंग इज इट Yes. ओके ओके सो सी यहाँ पर होगा क्या कि आप जो सिस्टम कर रहे हो वो सही है 1 to 10 आपके कंसोल में प्रिंट होगा नो इशू बट यू हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन 10 टाइम्स मान लीजिए अगर ये मुझे करना है 1 to 100 so at that time you will write the code of 100 line just to print the number from 1 to 100 right same you will type the same syntax just instead of 1 you will type the 2 and in that case it will take too much time so to reduce this effort लूप का कंसेप्ट आता है पिक्चर में ओके तो लूप में क्या होता है आपके ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे अब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में आप प्रिंट दे सकते हो या जो भी आपके स्टेटमेंट है एक्शन आपके जो भी एक्शन नीडेड है वो आप दे सकते हो अगर मान लीजिए हमको एक्शन करना है प्रिंट ओके तो हमको क्या करना चाहिए इट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स तो मुझे 1 to 10 चाहिए तो 10 टाइम्स वो एग्जीक्यूट होगा ओके just in one line simple we can say we don't need to type or give the instruction for 100 time or 10 times depending upon your frequency हमको जितना चाहिए उतना नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती है लूप में ओके तो अब ये लूप एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है और इसके टाइप्स क्या है तो वो देखते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम रिपीटिंग कि लूप क्यों यूज करते हैं हम कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना जो भी हमारे कोड है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या कोड कहो आप उसको आपको एक नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है नॉट फॉर वन टाइम मोर देन वन टाइम में आपको उसको एग्जीक्यूट करना है तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखोगे है ना इट्स नॉट गुड फॉर रीडेबिलिटी ऑल्सो आप उसको रीड भी नहीं कर पाओगे सो फॉर दैट रीजन वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लूप ओके सो हियर देयर आर बेसिकली three types okay basically three types first is while loop okay अब इसका मीनिंग देखेंगे वन बाय वन देन do while loop then for loop okay these are the three loops and for Java 5 okay there are more versions of Java as well so for Java 5 the new loop we can say or advanced version is introduced as for each अब ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है ये मैं आपको बताता हूँ ओके for now we will focus on this first three which are like relevant okay देखिए first of all we are going to see it as a we will see a while loop okay while loop अब इसका कंसेप्ट समझ लीजिए पहले ओके
what will be in a while loop? In while loop you have to type the keyword as a while. In bracket we are giving the condition. अब ये सब बताता हूँ मैं condition वगैरह क्या होगा. We are giving the condition. In that it will enter the while loop. After that condition is true, it will enter the while loop, and we are having some statements to execute, right? We are having the some statements to execute. जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है मान लीजिए वो एग्जीक्यूट होंगे. ओके, एंड वी आर गोइंग टू क्लोज इट. ओके, मान लीजिए ये सिंटैक्स है फॉर द व्हाइल लूप. सो यू टेल मी कि यहाँ पे ये कंडीशन स्पेसिफाई हुई कि मुझे क्या करना है, कुछ प्रिंट करना है, और डिपेंड अपॉन सम कंडीशंस जैसे हमने कल देखा था, लेस देन और इक्वल टू और बाय कंपैरिजन वी कैन डू इट. अब स्टेटमेंट हमारे मान लीजिए प्रिंट स्टेटमेंट है. सो हाउ इट विल बी गेट प्रिंटेड. ओके, हाउ इट विल बी गेट प्रिंटेड. ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये है सिंटैक्स आपका. ओके, सो वी विल ट्राई दिस. ओके, ऑल कैन सी माय स्क्रीन. Yes. ओके, इक्लिप्स सभी को दिखाई दे रहा है. ओके, या सो हियर आई एम क्रिएटिंग वन पैकेज फॉर व्हाट? लूप्स. Okay, so we have the package created here, right? Loops underscore dec. Right click again on the package, just go and try to create a new Java class. That Java class I am creating for the while loop and finish. Okay, so we have created one class with name as a while underscore loop. Okay, so what is the first task? We have to create the main method for the execution, otherwise execution start नहीं होगा. So what is the syntax? You have to keep the syntax. Okay, and so this is your main method. That means whatever will be in the main method, that will be get executed, right? That will be get executed. Now I'm going to define one variable. Okay, int a is equal to 10. Okay, this is my variable. यहाँ पे मैंने क्या किया है? Can anyone tell me? ये क्या होता है syntax? Again I'm writing for you. First one is what the data type, है ना? इसको कहते हैं हम data type. Sorry, data type, right? Int is a data type. Then I'm defining a variable. A is the variable equal to sign, and then I'm giving the variable or simple value, right? ये syntax है ना इसका. That is int is the data type, a is the variable, 10 is the value assigned to the a. यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, right? Now I am using the while loop. While in bracket I am giving one condition, x is less than 50. Okay, and then we have to give the while body. So while body is presenting this. Okay, oh, not the x, sorry, it's a. We have given the variable a. Okay, a is less than 15. Okay, now I am entering this in while loop. Okay, now I want to print the value of a. So syntax wise it's okay. Syntax wise it's okay. Now what you will get in the output in console through this code? Yes, my question is what you will get in the output. Now there is no error in the syntax, right? As of now there is no error in the syntax. Infinite. Okay, infinite means exactly what? Nothing on the console. कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए.
the value of क्या होगा? variable a क्या है वैल्यू वेरिएबल की? 10. is Okay, no issue. I will try simply run it first. Okay. Okay. Now, here what is happening? See, you are getting 10, 10, 10 multiple times, like infinity. The reason is what it will do. First, it will check the condition. What is condition here? A must be less than 15. What is the value of A? 10. Value of A is what? 10. So it will check 10 is less than 15. Okay. So it will print it. And this loop will continue. What I said is, this instruction is repeated multiple times when up to this condition is true. अभी condition true तो हमेशा रहेगी. 10 is less than 15 हमेशा रहेगा. There is no change. What? There is no change. 10 is less than 15 ये हमेशा रहेगा. So for that reason, to stop your loop executed infinite time, we have to give the, after that we have to give the increment or decrement. इसको क्या कहते हैं? Increment or decrement. How it is given, I will tell you. Okay. The same code. For example, here after that I will type as a plus what a plus plus indicates, this is the post increment. देखिए a के बाद में अगर प्लस प्लस सिंबल होगा तो क्या होगा? इट इज कॉल्ड एज अ पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना? आफ्टर गिवन इंस्ट्रक्शन a की वैल्यू प्लस प्लस मीन्स बाई 1 इंक्रीज होगा. ओके, a की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस लूप? फर्स्ट अंडरस्टैंड. देखिए, फर्स्ट we have given the integer a as a 10. Okay, then we are giving the condition in while a is less than 15. अगर ये कंडीशन ट्रू है, अब यहाँ पे ट्रू है, लाइन नंबर 8 में क्या है? a is equal to 10, 10 is less than 15. It's a true. It will enter into this loop. Then it will first getting instruction as print the value of a. Value of a will be 10. It is get printed. After that, I am increasing the value by 1. So new value of a will be what? 11 now. Again it will go into the loop. अभी एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक कंडीशन ये फॉल्स नहीं आएगी. अब ट्रू है क्या देखेंगे. अगेन न्यू a values 11. Now it will check 11 is less than 15 as per the condition. Okay, again it will enter into this loop. It will print the value. So जब तक ये कंडीशन फेल नहीं होगी, which condition? That is a must be less than 15, तब तक ये लूप कंटिन्यू होगा. So now what output we will get here? If you will run this, 10 to 14. 10 to 14. Okay, we'll see it. See, you will get the value from 10 to 14. आपने इंडिविजुअल प्रिंट किया क्या? 10, 11, 12, 13, 14 नहीं. With using while loop, we are going to print the given code for a number of time. Okay, for the number of time. Okay, if I am changing this as this one, now tell me what will be the output. I am just changing the condition here. आउटपुट क्या होगा? सेम. 50 ऐड होगा. You will be added 15 because it will check 15 is less than or equal to 15. So condition is satisfied. Previously it was only less than. So 15 is less than 15 is not true. False. So वो loop के बाहर आ जाएगा. The loop will be not get executed. Now if I want to run this code, you will get 15 as well. You will get 15 as well. Okay, 15 के बाद क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है? मान लीजिए
आपकी न्यू वैल्यू 15 प्रिंट हुई. Just consider you got 15 printed in the, as per line number 9. After that we are making it a post increment. So new value of a will be a plus 1, that means 15 plus 1 is equal to 16. अब हो जाएगा लूप में, यहाँ पर लाइन नंबर 8 में it will check 16 is less than or equal to 15. कंडीशन बिकम फॉल्स, फेल हो रहा है कंडीशन यहाँ पे, तो ये लूप में एंटर करेगा ही. It will not enter into this loop. You will not get the 16 number printed here. Are you getting? Okay. For example, I will make here as 8. Okay. Now tell me what will be the this output. It won't run, sir. It will not run. Okay. Then it should give me some error, right? Well, I will try to run it. Simply, I will not get any output. Will not get any error to while running, but मुझे output नहीं आएगा. Why? What it will check? A value it is equal to 10. 10 is less than or equal to 8. Condition fail itself here only. It will not enter into this loop. Not print any instruction or any code which we have given. Okay, yeah. After that, if you are making any instruction, that will be get printed. But it is the outside of loop, right? Loop के बाहर का part है वो. It's an individual line of code that may execute. But इसके अंदर जो भी है वो execute नहीं होगा if this condition itself get failed. Okay. So for that reason, just to stop the flow, or we can say execution number of time, we are giving the increment or decrement. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इन while loop? Any doubt? Okay. So your assignment will be here. We have printed from 10 to 15. I just want you to print from 10 to 1 in decreasing order. Okay. 10 to 1 in a decreasing order. Then kindly put some logic in condition and kindly put some logic in line number 10. You have to increment or decrement. Just decide it and try to do it. Okay. That is your assignment for this while loop. Got it? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए. Okay. See, here for while loop we are trying to execute the code for number of time. जो यहाँ पे code है इस while body में, ये number of time execute होगा. But कब? First it will try to check this condition. while के बाद हमने condition दी है. क्या condition दी है? A should be less than or equal to 15. ये value वो check करेगा पहले A की value क्या है? 10. So it will check 10 is less than or equal to 15. Okay, it's a true. So it will enter into this and it will try to execute the code. Now line number 9 में क्या है? I'm just printing the value of A. So it will print A is equal to 10. So 10 print करेगा. Then next line में क्या होगा? We are using A plus plus means post increment. होता है कि A की वैल्यू 1 से बढ़ाई जाए. तो A की वैल्यू 1 से बढ़ा गई तो क्या होगा? 10 plus 1 11. So new value of A will be 11. Again it will go back to the line number 8. It will check 11 is less than or equal to 15. Condition is true. Again it will go into the loop and do same. At the last you are going to make A value 15 जो print होगा. But new value of A will be A plus 1, that is 15 plus 1 16. So it will check the condition 16 is less than or equal to 15. Condition get failed. यहाँ पर आपको false आ रहा है इसका return type. So it will be not enter into this loop itself. तो आपका execution stop हो जाएगा. Got it? Yes. So this is for while loop. Okay. Syntax समझ लीजिए यहाँ पे. While keyword. Then in bracket we are specifying the condition. We are giving the body. Inside that whatever the statement you have given, it will be get executed, and we have to specify the increment or decrement accordingly.
तो आपके लिए असाइनमेंट ये है कि यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं ये कोड रन करता हूँ तो मुझे अभी क्या मिल रहा है आउटपुट में, फ्रॉम नंबर 10 to 15. So in same way you want to get console in console from 10 to 1 in decreasing order. यहाँ पे 10 to 15 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मुझे आपसे आउटपुट क्या चाहिए, फ्रॉम 10 to 1 प्रिंट होना चाहिए आपकी कंसोल में. Okay, so put some logic and try to complete that assignment. Okay, that is your first one. Next, do while loop. Next is what? Do while loop. Okay, do while loop. Now here just there is some difference. Okay, there is some difference. Now in do while, what is the syntax? First understand, we have to type the keyword as a do, then we have to specify the body. Okay, we have to specify the body. Inside the body definitely we are going to print some statement, right? Some statements. Then just to take the control or number of times execution, हमको क्या करना पड़ता है, we have to put increment or decrement and depending upon our requirement. Then after that the body get closed, and here we have to use the while keyword and the condition. Okay, so on screen you have syntax for both while and do while. Can you guess the difference? यहाँ पे कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एटलीस्ट कैन यू गेस इट? Sir, in while the statement will be executed if the while condition will be true. But in do while, sir, a statement must be executed one time, at least one time, sir. Okay, good. देखिए, do while yeah, go ahead. execute statement at the later on condition. Good. देखिए, simple understanding. In while loop, first we are checking condition. हम पहले condition check करते हैं. If it is true, then it will go into the loop and it will execute the code whatever we have written. तो अगर कंडीशन फेल होती है तो आपके लूप के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं होंगे, इट विल जस्ट कम आउट ऑफ द लूप, राइट? बट डू वाइल में क्या होता है, वी आर गिविंग फर्स्ट स्टेटमेंट, आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो चेक नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन, वो चेक नहीं करेगा, वो पहले क्या करेगा, आपके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपने दिया है अप्रोप्रिएट वो होगा. देन एट द लास्ट इट विल चेक द कंडीशन. अब वो कंडीशन चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है. अगर ट्रू है तो अगेन वो डू में जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा. अगर मान लीजिए फॉल्स है तो एग्जीक्यूशन स्टॉप. बट डू के अंदर जो भी था, ये डू बॉडी के अंदर जो भी था वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, एटलीस्ट फॉर वन टाइम, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन. कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है वो तो बाद में चेक कर रहा है, बट पहले वो क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तो करेगा. It will first try to execute the statement. Okay? It will first try to execute the statement. Condition वो last में check कर रहा है, right? See while and I am specifying the condition at the last. Okay? So this is what the do while. Okay? We will see the do while also. Okay? Here is the while loop. Right click, create a new class and create it for the do underscore while. Okay, you have created one class. Again this is the main method to start your execution, whatever it means. Okay. Now here we are going to see the do while loop. Okay,
So again I'm specifying one integer as a int a is equal to 10. मान लीजिए I am going one value as a 10. Then as per the syntax, first I will use the keyword do. Inside the curly braces I am giving some instruction. Okay, I want to print the value of a. Okay, I print the value of a. I'm giving one integer a is equal to 10. Okay, so I have given the value. Now I want to use the do loop. Okay, do and then curly braces open, enter. Okay, now here we are giving some instruction. I want to print the value of a. Okay, now after that I told you to give some increment or decrement. So अगर मुझे increment order में कुछ print करना है, so I am giving as a plus plus. Okay, that means a की value क्या होनी चाहिए? +1 से increase होनी चाहिए. Now after this do body get completed, देखो यहाँ पे curly braces है, यहाँ पे मैं use कर रहा हूँ while and I am giving a condition. Okay, my condition is what? A is less than or equal to 15. Okay, a is less than or equal to 15 and the statement close. Okay, this is what we are doing by using do and while. Now understand concept क्या दिखे यहाँ पे. In line number 6 I am specifying one variable a with value 10. Okay, then in 7 I am using do loop. तो यहाँ पे कुछ execution नहीं है. जैसे ही डू लूप है तो वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा लाइन नंबर 8 से. 8 में क्या इंस्ट्रक्शन दिया है मैंने? प्रिंट वैल्यू ऑफ ए. वैल्यू ऑफ ए क्या है? 10. वो 10 पहले प्रिंट करेगा मान लीजिए. देन इट इज गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए बाय 1. दैट मींस न्यू वैल्यू क्या होगी? ए की 11. अब 11 के बाद प्रिंट तो कुछ होना नहीं है, वो आएगा इस 10 नंबर लाइन में और चेक करेगा कंडीशन. दैट इज न्यू वैल्यू इज व्हाट? 11 which is less than or equal to 15. It's a true. So again it will go back to the do और वो execute करेगा. But up to line number 9 उसने condition check नहीं किए दोस्तों. Okay, we have not checked the condition. So whatever you have given the instruction, it will be get executed one time. Okay, now see if you will run this code what we are expecting. आपको क्या होगा? स्क्रीन पर क्या दिखेगा? 10 to 15. 10 to change. Okay, yeah, मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ. So what you will get now? 10 to 19. 10 to 19. Okay, you will get from 10 to 19. देखो 10 यहाँ पर है और स्क्रॉल करोगे तो 19 यहाँ पर है. राइट, अब मैंने कहा था कि कंडीशन फेल करना है. मान लीजिए वी डोंट वांट टू चेक द कंडीशन. ओके, यहाँ पे कंडीशन हो रही है फेल. नाउ व्हाट एक्सपेक्टिंग? योर आउटपुट एक्सपेक्टिंग नाउ. अगर ये कंडीशन मैंने चेंज की है, a इज लेस देन और इक्वल टू 1, so what you will get in the output? 10. देखिए कंडीशन फेल हो रही है बट फर्स्ट डू का जो इंस्ट्रक्शन था वो वन टाइम एग्जीक्यूट होगा. ओके, you are getting 10 but not beyond 10 because अब यहाँ पे क्या हुआ है देख लीजिए. value of print value of a is get printed as a 10. after that I am making it as a post increment. so 10 plus 1 it's equal to 11. now it will go in line number 10. it will check is 11 is less than or equal to 1. condition false. it will not enter into the do loop. execution get terminated.
या तो किसी को कोई डाउट है इन दिस डू वाइल लूप? And are you getting the difference between these two, while and do while? Yes, sir. ओके देखिए दोनों में क्या हो रहा है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे है? तो while में पहले कंडीशन चेक होती है, इन while वी आर चेकिंग द कंडीशन फर्स्ट, देन स्टेटमेंट, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. ओके, सीक्वेंस समझ लीजिए. एंड इन डू while वी आर चेकिंग फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ irrespective of the condition, then मैं चेक कर रहा हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, चेक कर रहा हूँ मतलब आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शन, and then at the last I'm checking the condition at the last. That's why आपके do body के अंदर जो भी instructions है वो एक बार at least one time will be get executed irrespective of the condition. Okay, irrespective of the condition. Okay, now अब यहाँ इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ पे मिलेगा आपको? When we can apply this type of condition, my dear? Any guesses? मैं हर चीज का एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ आपको, है ना. कल भी हमने देखा था फॉर एग्जांपल नेस्टेड लूप, नेस्टेड, अगर नेस्टेड कंडीशन देखनी है हमको, नेस्टेड इफ, तो वो कहाँ पे थी? कंडीशन इन कंडीशन, लाइक लॉगिन का एग्जांपल लिया था हमने, राइट? दिस वन इटसेल्फ, राइट? ये लॉगिन की टेस्ट केस होगी, तो वहां पे ये आपको लॉजिक समझना चाहिए क्या लिखा है. अगेन आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट टाइम कि ये कैसे हुआ था सब. ओके, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर इसका एग्जांपल कहाँ पे होगा, लाइक ये हम कब यूज करेंगे? डू वाइल और वाइल, और ये लूप का कंसेप्ट कब यूज करेंगे? एनी गेसेस? कहाँ पर? एज कैलकुलेशन में. एज कैलकुलेशन, ओके ओके ओके. देखिए सिंपल लॉजिक है यार. ऐसी कौन सी चीज है जो आप मल्टीपल टाइम चेक करोगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया एज कैलकुलेशन, तो उसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इन एज फील्ड यू वांट टू चेक दी मल्टीपल इटरेशंस. जैसे मान लीजिए एज की वैल्यू 8 से 56 एक्सेप्ट करता है, नॉट 8, 18 टू 56 मान लीजिए. तो आप ऑटोमेशन से ऐसा नहीं करोगे ना कि वन टाइम आपकी स्क्रिप्ट 18 भेजेगी फिर 19, 20. तो आप उसको लूप में कन्वर्ट कर दीजिए. दैट मीन्स इट विल टेक द वैल्यू ऑफ 18 इन फर्स्ट इटरेशन, फिर वो लूप क्लोज होगा, देन 19 और ऐसा 56 तक. इन वन गो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. वही अगर मैन्युअल चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेब पेज ओपन करना पड़ेगा, एज फील्ड में जाना पड़ेगा, वहां पर वो वैल्यू इनपुट देना पड़ेगी, सेव करना पड़ेगा, लाइक दैट. ओके, और मान लीजिए सेम एग्जांपल इन लाइक ई कॉमर्स. मान लीजिए आपको चेक करना है कि वन वैलिड यूजर कैन परचेस दी 10 कंसाइनमेंट कॉन्सिक्वेंटली. ओके, आपको एक साथ उसको 10 बार उसको कुछ चीजें परचेस करनी है. तो आप क्या करोगे? वो जो परचेस का आपने टेस्ट केस लिखा होगा वहां पे बस उसका प्रोडक्ट चेंज करोगे, ट्राई टू चेंज द प्रोडक्ट. और आपको वो भी चेक करना है कि सेम प्रोडक्ट 10 टाइम्स कोई परचेस कर सकता है क्या? 10 टाइम्स. ओके, नॉट द 10 क्वांटिटी आई एम सेइंग. 10 क्वांटिटी एक वन को में परचेस करेगा, वो अलग टेस्ट केस हुई, बट आपको चेक करना है कि सेम प्रोडक्ट कोई यूजर 10 टाइम्स परचेस कर सकता है क्या. सो यू विल यूज दिस लूप कंसेप्ट जो आपका रिपीटेशन देगा आपके एग्जीक्यूशन को. गॉट इट? इसमें कोई डाउट है? नो. ओके, चलो. सो नेक्स्ट वी आर सीइंग दी फॉर लूप. फॉर लूप काफी इजी है. ओके, फॉर लूप इज वेरी इजी. सो फॉर लूप देयर इज नथिंग दैट मच क्रिटिकल व्हाट कंसेप्ट. इसमें क्या किया उन्होंने? फॉर कीवर्ड यूज करना है इन ब्रैकेट. देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए. ओके, फॉर द फॉर लूप देयर इज वेरी इजी. They have given all your concept in one shot. You have to use for keyword. You have to first
इनिशियलाइज, ओके, इनिशियलाइज. अब इनिशियलाइज मैंने दिखाया आपको क्या होता है, बट अगेन आई विल टेल यू. You have to give the initialization, then semicolon, okay, not the comma, semicolon, then we have to give the condition. आपको कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा जैसे हमने देखा था. Then we have to specify the increment or the decrement, okay, decrement, bracket close, and after that whatever your body, like whatever your body, for example I want to print some statement, okay, of the for body, it will get printed or it will be get executed. देखिए फॉर लूप का सिंटैक्स समझ लीजिए. फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, FOR, इन राउंड ब्रैकेट आई एम गिविंग 3 पैरामीटर्स, not parameters but 3 things. First is initialization, next I'm specifying the condition, sorry it's not comma dear, okay, semicolon here also, then semicolon, it's increment or decrement, and again body जो आपको execute करना है multiple times, again it's the body, okay. Syntax पे कोई डाउट है किसी को? Now you tell me what is initialization. I told you. What is initialization? So starting value. Assigning a value to the variables. Good. Okay. Okay, so this is your main method, okay. Now here it's very simple, okay. Directly I'm using for loop, so keyword is a for, in round bracket I'm initializing, means I'm giving one variable and its value, that means int a is equal to, what are the things you can consider as a 10, okay, you can consider as 10 for now. Here we get space. Int 10 semicolon, then I am giving the condition itself. What condition I am saying is like this, a is less than 20, okay, this is my condition, this is my condition, and after that I am making at a increment like this a shift plus plus, okay. See यहाँ पे क्या दिया मैंने, फर्स्ट इनिशियलाइज किया है एक वेरिएबल दैट इज इंट a इज इक्वल टू 10, देन कंडीशन सेमीकोलन, कंडीशन मेरी ये है कि a की वैल्यू लेस देन 20 होनी चाहिए, ओके, देन अगेन सेमीकोलन एंड आई एम गिविंग द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एज पर रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट दे रहा हूँ मान लीजिए, ओके. देन वी हैव टू स्पेसिफाई द बॉडी, और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, अल्टीमेटली आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a variable. Now guess what we will get in output. क्या मिलेगा? 10 to 19. Okay. फर्स्ट नंबर इज 10, ये होगा 90 तक प्रिंट, 90 तक मतलब a की वैल्यू प्लस से बढ़ रही है तो मान लीजिए 19, देन 19 की वैल्यू प्रिंट हुई, उसके बाद अगेन इट विल कम टू द फॉर लूप, इंट a इज इक्वल टू 10, a इज लेस देन 20, अब a इज इक्वल टू 10 मतलब न्यू वैल्यू a की क्या बन जाएगी, 19 प्लस 120, ओके. So it will check the condition 20 is less than 20, false, means condition is not satisfied, failed. So it will come out of the for loop, execution will be get terminated. Okay. Here the for loop is quite simple. मैं बस for loop में ही पूरे condition specify कर दे रहा हूँ. Got it? Any doubt?
ओके चलो यहीं पे आप मुझे लॉजिक बोलिए. ओके, आई वांट टू चेक योर लॉजिक आल्सो. यहाँ पे मैंने 10 to 19 प्रिंट किया है. ओके, मुझे 10 to 1 प्रिंट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. A minus minus. ओके, ए माइनस माइनस. ओके, करेक्ट. और इधर A less than 20, A less than 1. ए लेस देन 1 करना पड़ेगा. हाँ. ओके, गुड. गुड इनफ. Greater than 1. ओके, he's saying greater than 1. Okay. A is greater than equal to 1. Okay, greater than or equal to 1. Okay, sorry. Okay. Oh. Okay. देखिए मेरा आउटपुट मैं सिंपल बता रहा हूँ. मुझे 10 to 1 प्रिंट होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ओके, कैन आई गो एंड एग्जीक्यूट? इसमें किसी को डाउट है? व्हाट कंडीशन वी आर स्पेसिफाइंग हियर? ओके, विल ट्राई इट, नो इशू. A less than 10. 10 9 डिक्रीजिंग ऑर्डर अप टू 1. बस यही लॉजिक लगाना है आपको वाइल एंड डू वाइल लूप में. ओके, नाउ यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था? 10 ये वैल्यू है. उसके बाद मुझे 9 नहीं चाहिए था, मुझे 8 चाहिए था. 8 6 4 3 सॉरी नॉट 3 2 ओनली even numbers. What I can change here? Sir, you can add another decrement inside the bracket above the system out print. Okay, tell me what I can do here. A minus minus and colons A minus minus and semicolon. okay. Okay, done. So can I get the print as a 10 8 6 4 2? सर जो स्टार्टिंग में पहला जो डिक्रीमेंट किया वहाँ पे डिक्रीमेंट हटा के A डिवाइड बाय 2 करना चाहिए. ओके, 1 by 1. अब यहाँ पे हम रन करके देखते हैं. ओके, जस्ट ट्राई. We are getting 9 7 5 3 1. Exactly reverse. I'm getting odd numbers. Chalo. What the second logic you told, right? You are saying here we are doing A डिवाइड बाय 2. divide by 2. Okay. नीचे का डिक्रीमेंट जो है ना उसको कट कर दीजिए. Okay. Yeah, I'll cut it. No issue. Still we are getting error. Still we are getting error here. And A divided by 2 उसका मीनिंग क्या होता है? A की वैल्यू 10 है, 10 divided by 2 5. What does it mean? Some number. Number. Okay. Sir. Yeah. Go ahead. Sir, in the for loop, we will decrement A minus minus, and afterwards, after the output printing, we'll decrement again, not before. I made a mistake. Okay, no issue. Right? That's what you are saying? Yes, sir. Okay, right. Got it? देखिए कंसेप्ट क्या पे यहाँ क्या हो रहा है? लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है. ओके, यहाँ पर उन्होंने जब इन्होंने पहले दिया था, सो इट विल ऑलरेडी डिक्रीज द वैल्यू. जो A 10 था उन्होंने यहाँ पर अगर A माइनस माइनस प्री डिक्रीमेंट किया है, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट, तो क्या होगा कि A की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बाय 1. इट बिकम्स 9. तो इसलिए उसने 9 प्रिंट किया. उसके बाद अगेन वहां पर कंडीशन में जाएगा
and it decreasing the value and checking it. So वो क्या होता है, 9 से स्टार्ट होगा उसका एग्जीक्यूशन, बिकॉज उन्होंने ये वैल्यू जो है वो पहले दी थी, राइट? मान लीजिए ओके, अगेन वन लॉजिक, मुझे फॉर के बॉडी में कोई चेंज नहीं करना है, आई डोंट वांट टू चेंज इट, स्टिल आई वांट टू प्रिंट इट द सेम 10 8 6 4 2. And is it possible? Okay, no issue. Okay, so see, मैं ये आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ. ओके, असाइनमेंट क्या है? अगेन फॉर वाइल लूप आपकी असाइनमेंट है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है फ्रॉम 10 to 1. Again for do while same, I want to get printed from 10 to 1. But for this for loop आपका टास्क है कि आपको for बॉडी में कुछ चेंज ना करते हुए प्रिंट करना है 10 to 1 के सभी इवन नंबर्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो स्क्रीन पे है अभी 10 8 6 4 2, ये नंबर मुझे प्रिंट होने चाहिए, बट विदाउट डूइंग एनी चेंजेस इन दी फॉर बॉडी. फॉर बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है. Got it? Make sense? फॉर के अंदर से नेस्टेड लूप लगा सकते, इफ कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग In for. Yeah, okay, you do it. Okay, वही आपका असाइनमेंट है. आपके लॉजिक जितने भी पॉसिबल होंगे आप प्लीज उसको लगाइए and we will discuss it. Okay, or better you can send me also, so I will check. Okay, यही आपका लॉजिक क्रिएट करेगा अब. ओके, मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको ना असाइनमेंट, दो इट मे लुक सिंपल फॉर सम ऑफ यू जो हु आर सेइंग कि मुझे जावा आता है, नो इशू, इट्स वेरी गुड, यू आर हैविंग सम बेसिक नॉलेज. बट व्हेन यू आर डीलिंग विद द लॉजिक्स, डिफरेंट लॉजिक, तो हर टेस्टर या हर जो कोड लिखता है पर्सन, वो किस तरीके से कोड लिख के आउटपुट लाता है, दैट मैटर्स. ओके, जब आपको इंटरव्यू में स्क्रीन शेयर करके कुछ पूछा जाएगा तो उनका इंटेंशन ये चेक होता है कि आप कोड की अंडरस्टैंडिंग क्या करते हो और कितने अच्छे तरीके से कोड का आउटपुट लाते हो. ओके, वन कैन यूज मेनी मल्टीपल वे. ओके, एक चीज को करने के लिए बहुत सारे वे हो सकते हैं, बट हाउ यू आर इफिशिएंट और आप कितने इजी तरीके से वो कर सकते हो. ओके, देखिए जितना कोड आप डिफिकल्ट लिखते हो उतने अच्छे आप मतलब जावा के अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, ये कभी नहीं होता है उसका मीनिंग. ओके, कोड शुड बी इजी एंड शुड बी इजीली एग्जीक्यूटेबल और आउटपुट आना चाहिए. ओके, फिर ऐसा नहीं कि आप उसको 1 लाइन में कन्वर्ट कर रहे हो कि 100 लाइन में, इट डजंट मैटर. ओके, और वो स्लोली स्किल से आता है. ओके, इट बिकम्स विद द प्रैक्टिस. ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में सब कंसेप्ट आएंगे और आप वो कर पाओगे. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. आपको कुछ एरर आएंगे, वो समझ लीजिए, उसको मॉडिफाई कीजिए, देन यू बिल्ड योर कंसेप्ट. ओके, आपको इन वन गो आपको सभी कंसेप्ट याद भी नहीं रहेंगे और आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे. ओके, एक साथ स्लोली उसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, कुछ अलग लॉजिक से सेम आउटपुट लाने का ट्राई कीजिए. ओके, दैट विल बी योर मेन अप्रोच टू लर्न जावा एंड सेलेनियम. तो ये जो लास्ट है फॉर ईच लूप मैं कर लूंगा, बिकॉज इसके लिए मुझे कुछ कंसेप्ट पहले बताने हैं. फॉर एग्जांपल अरेज एंड सम कंसेप्ट. ओके, गॉट इट? So tomorrow we will see the 4 type for each loop and also some keywords. Okay, keywords like break and continue. Okay, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा एग्जीक्यूशन कहीं बीच में रुकना भी चाहिए और कहीं बीच से स्टार्ट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल here if I wanted to print the value, here if I wanted to print the value, for example the values get printed from 10 to 1, right? 10 to 1 मुझे चाहिए था 7 में स्टॉप हो जाए और वो 4 से स्टार्ट हो जाए. I want to skip the execution for this number. तो ये कैसे हम हैपन कर सकते हैं एग्जीक्यूट, वो हम कल देखेंगे along with the 4 type for each loop. Okay, got it? Any doubt? Any doubt? असाइनमेंट क्लियर है आपका? आज का असाइनमेंट क्या है? You want to use the first condition do while, जिसमें मुझे 10 to 1 प्रिंट होना चाहिए. सेम do while से भी मुझे वही आउटपुट चाहिए 10 to 1. फॉर लूप से मुझे क्या चाहिए था आज? बस इवन नंबर चाहिए 10 to 1 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10 8 6 4 2. ओके, बट विदाउट डूइंग एनी चेंज इन द फॉर लूप. ये आप आज कीजिए और कल हम ये देखेंगे. ओके.
डन? Yes. Okay, so if there is no doubt we can stop here. Okay, okay, आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं अभी बोल रहा हूँ। ओके, एक साथ आप स्टार्ट करोगे कि मैं 7 दिन की प्रैक्टिस एक साथ करूंगा जो भी असाइनमेंट है, देन इट विल बी ट्रबल फॉर यू। पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि सम ऑफ यू डोंट नो जावा, राइट? आपको जावा का कुछ भी पता नहीं होगा, बट एज ऑफ नाउ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको यहाँ तक का जो पार्ट है वो समझ में नहीं आएगा। इवन फ्रॉम सिंपली क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट, पैकेज, क्लासेस, ऑल द थिंग्स, काफी बेसिक चीजें से बताई मैंने। ओके, जस्ट टू बिकम कंफर्टेबल। अदरवाइज मैं डायरेक्टली कभी लूप स्टार्ट कर सकता हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सिंटैक्स क्यों, कैसे, कब आया है। अभी आपको पूरा सिंटैक्स पता है, ये पैकेज क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ये फिफ्थ लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, राइट? सो मैं अगर आपको कुछ कंफर्टेबल वे से पढ़ा रहा हूँ तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, अदरवाइज एट द लास्ट क्या होगा कि आपको सब बल्कि लगेगा वो। ओके, इट विल लाइक काफी बल्कि कोड है और मुझे कोड ही समझ में नहीं आ रहा है। ओके, इट मे हैपन विद सम ऑफ यू। मैंने बोल रहा हूँ कि हर एक के साथ हो रहा है, बट सम ऑफ देम गेट ट्रबल्ड कि कहाँ से कैसे आ रहा है। कभी एरर आता है तो वो डर जाएंगे। तो डोंट गेट वरीड, एरर आएगा उसको समझ लीजिए क्या एरर वो बोल रहा है, उसको नलीफाई कीजिए। और वो भी हम देखेंगे, एरर हैंडलिंग मेथड्स वो भी देखेंगे, नो इशू। बट मैं कुछ बेसिक वे से कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वे तक जाएंगे हम। ओके, सो ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। यू ऑल्सो क्रिएट वन प्रोजेक्ट, इसको आप नाम दीजिए प्रैक्टिस डेमो, जो भी देना है, और उसमें सिस्टमेटिक वे से आपके जितनी भी असाइनमेंट है वो सेव कीजिए। डोंट यूज एनी रैंडम वे, आपको ही पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या असाइनमेंट रखी है। जैसे कि स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट मांग रहे तो उसके जितने भी टाइप है वो एक पैकेज के अंदर आने दीजिए, सो इट विल बी इजी टू फाइंड। ऐसा नहीं कि इफ है उसके बाद लूप का है कंसेप्ट, उसके बाद डेटा वेरिएबल का कंसेप्ट है, सो यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको कल जाके रिवाइज भी करना है तो it will be very easy if you will maintain some good folder structure. Okay, otherwise it's very difficult. चलो, if there is no doubt we will stop here. Okay, सर thank you. Yeah, बोलिए, go ahead. सर कल आपने जो असाइनमेंट दिया था ना, मार्किंग सिस्टम का, नेस्टेड इफ वाला, हाँ, सर वो सीधा मुझे एलसी प्रिंट करवा रहा था। वो बीच का जो इफ स्टेटमेंट्स था ना, चेक ही नहीं हो रहा था उस कंपाइलर में। सीधा एल्स, जो लास्ट में एल्स लिखते हैं ना, वो ही प्रिंट हो रहा था। दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट फॉर लूप है ना, सॉरी इफ कंडीशन है, वही फेल हो रहा था दोस्त। अच्छा, देखिए, इफ कंडीशन फेल होगा, फर्स्ट इफ, यहीं पे देख लीजिए। सॉरी, आई हैव नॉट शेयर स्क्रीन, राइट? शेयर मी स्क्रीन, लेट मी शेयर। मैं क्विकली समझाता हूँ। या देखिए, ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन डियर? यस, मान लीजिए आपका लाइन नंबर 10 है, 10। ओके, इट्स हाईलाइटेड एज ए यूजर नेम। मान लीजिए आपका यूजर नेम ही गलत है, तो वो ये पूरा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा दोस्तों। ये ब्लू पार्ट जो हाईलाइटेड है, इट विल नॉट चेक एनीथिंग इनसाइड, वो जस्ट स्किप आएगा और एल्स पे आएगा, राइट? यही हो रहा है ना आपके साथ? हाँ, वो सीधा एल से प्रिंट करवा रहा है। देखो, अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड गलत लिख दिया, AB2C, विच इज रॉन्ग एज पर दी लाइन नंबर 7। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे क्या प्रिंट होगा? द यूजर नेम इज रॉन्ग। वो कुछ देखेगा नहीं। या गो अहेड। फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इफ का फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, डिस्टिंक्शन वाला, वो प्रिंट हो रहा है, बट वो बाकी के जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो वो शायद से वो ये नहीं करेगा। ओके, आपका एग्जांपल लाइन नंबर 11 प्रिंट हो रहा है और यहाँ से प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट? यू आर सेइंग? हाँ, सेकंड इफ से नहीं हो रहा प्रिंट। सेकंड इफ से प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इफ वाली। तो आपका एल्स पार्ट होगा, इसका एल्स पार्ट होगा, और ये तो होगा ही नहीं। अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू है तो वो इस बॉडी में जाएगा। इस बॉडी में भी आपके पास आपने एक और इफ दिया है, दिस वन। तो ये अगर गलत है तो ये इफ नहीं प्रिंट होगा, ये एल्स पार्ट प्रिंट होगा उसका। सिंपल है, देखो, इफ पार्ट फेल होता है तो वो एल्स पे जाएगा, उसी सेम इफ के एल्स पर, नॉट अदर एल्स। यहाँ पे 2 एल्स है, यहाँ पे 2 इफ है। इस इफ का एल्स पार्ट ये है। ओके, इस इफ का एल्स पार्ट ये है। तो यू जस्ट मेक लॉजिक कि ये इफ पार्ट फेल हो रहा है तो वो इस एल्स पे जाएगा,
अगर ये पार्ट फेल हो रहा है तो वो ई सेल्स पे जाएगा। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस दियर। और स्टिल आपको डाउट होगा तो मुझे वो आपको जो है असाइनमेंट कोड वो भेजिए, मैं बताता हूँ आपको एरर कहाँ पे आ रही है। ओके सर अभी स्क्रीन शेयर कर दो फटक से। अभी मुझे थोड़ा सा प्रोजेक्ट का ही काम है दोस्त, इसलिए मैंने क्विक किया। मुझे मेल कीजिए आप, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन मेल ठीक है इटसेल्फ। ओके सर, मैं आप डायरेक्टली मेल बॉडी में भी कोड भेज दीजिए, नो इशू। इफ यू डोंट वांट टू क्रिएट एनी वर्ड फाइल और समथिंग, आप डायरेक्टली जस्ट मेक इट कंट्रोल ए कंट्रोल सी, जस्ट पेस्ट इट इन द बॉडी। ओके आई विल चेक इट, नो इशू। ओके चलो, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।